Pema Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh and a seasoned leader of the BJP, was sworn in as the Chief Minister of Arunachal Pradesh for the third consecutive term today after winning the recent state elections. The ceremony took place at the DK State Convention Center in Itanagar, marking a significant moment in the state's political history. The day before the ceremony, Pema Khandu was unanimously chosen as the leader of the BJP legislature party in Arunachal Pradesh. Despite facing challenges from the opposition, Khandu's leadership prevailed, allowing him to secure this historic third term as Chief Minister. This event was graced by several prominent political figures. Union Home Minister Amit Shah, Health Minister J.P. Nadda, and Minister Kiren Rijiju were present to witness the oath-taking ceremony. Additionally, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma and Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang were notable guests who attended the event. Pema Khandu, the son of former Chief Minister Dorji Khandu, has a long history in politics. He began his political career in 2000 and contested his first election as a member of the Legislative Assembly from the Mukto constituency. Since taking office as Chief Minister in July 2016, Khandu has changed his party affiliation twice, first from the Indian National Congress to the People's Party of Arunachal and then to the Bharatiya Janata Party. In the recent state elections, Pema Khandu won uncontested from the Mukto constituency. After his swearing in, Pema Khandu addressed the people of Arunachal Pradesh with a sense of purpose and commitment. He expressed deep gratitude to his fellow BJP MLAs for their trust in him. He also acknowledged the hard work of party leaders, workers, and MPs who played a crucial role in the BJP's resounding victory in the polls. Khandu emphasized the importance of inclusive development, aiming to achieve a Viksit Bharat, that is, developed India, by 2047. He accepted the responsibility of leading the BJP toward another term of development-oriented governance, in line with Prime Minister Narendra Modi's vision. The Chief Minister also highlighted the historic victory of the BJP, which secured 46 out of 60 seats in the Arunachal Pradesh Assembly. He pledged to work collaboratively with party members, MLAs, and Karyakartas, that is, party workers, to accelerate comprehensive growth in the state. Pema Khandu's address was filled with optimism, commitment, and a clear vision for a prosperous Arunachal Pradesh. His leadership in the new term is eagerly awaited by the people of the state, who look forward to the positive changes and developments his administration promises to bring. अपने लोगों का हित के लिए, अपने लोगों का डेवलपमेंट के लिए, और सबसे पहला एजेंडा अभी कैबिनेट में हम लोग लिया जाएंगे कि 100 डेज के अंदर में ये सरकार क्या क्या काम करेंगे। तो 100 डेज का टारगेट सेट करते हुए जनता को हम बताएंगे कि इस 100 डेज में 100 दिन में क्या क्या काम इस राज्य में होने वाला है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं दोबारा जितना भी मीडिया दोस्त हैं, आप सभी का माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की पूरा जनता को एक बार फिर मैं नमन करता हूं, हाथ जोड़ के। आप सभी का आशीर्वाद के कारण से आज दोबारा तीसरी बार यहाँ पे अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी को आप सभी का आशीर्वाद से गठन हुआ है। आप सभी का आशा काफी है, हमें पता है। आप सभी का आशाओं को हम निराशा होने नहीं देंगे। टीम अरुणाचल के हिसाब से इस सुंदर प्रदेश को हम लोग एक साथ लेके जाएंगे। Sir, first time you have a female cabinet minister in your ministry. So how did that decision came? देखिए, जैसे अपना पत्रकार दोस्त ने कहा है कि जो वुमेन कैबिनेट में आया है, इसका डिसीजन किस प्रकार से लिया गया है। तो आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं। आप सब लोग ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में पिछले टर्म में नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को भी पास कर दिया है राज्यसभा और लोकसभा में। अभी उसका फुल रोल आउट करना है बाय 2029। तो इस प्रकार से अपना स्टेट में भी 2029 में 33% रिजर्वेशन अपना एमएलए विधानसभा में भी होगा। तो उसको देखते हुए अभी इस बार हमने एक मैसेज भेजने का कोशिश किया अरुणाचल के जितने भी जो हमारा वुमेन सेक्शन है कि आप लोग तैयार रखिए। आने वाला दिनों में अपना सरकार भी एक महिलाओं के माध्यम से चलना चाहिए। इसलिए मैंने इस बार एक कैबिनेट मिनिस्टर को भी एक वुमेन को हमने दिया हुआ है।